आस्क योरसेल्फ, अभी आपकी लाइफ का एक मेजर चैलेंज क्या है, ये कितना टफ है। इसके रीजंस देने की बजाय एक वाइल्ड और क्रेजी आइडिया सोचो जिससे शायद उसे सॉल्व करना पॉसिबल हो। Welcome, my name is Sukhpreet Singh Gyani, and you're watching the channel Unfiltered Book Talk. No spoilers, just the core review, the raw, honest truth about books. If it is on my shelf, it's getting a straightforward review. Let's talk about books. Today, in this second episode from the book, Success is Never Ending, Failure is Never Final, we explore, based upon what Robert Schuller tells us, the process of changing from failure thinkers to success thinkers. रॉबर्ट शुलर इसी बुक में हमें एक डेडली कॉम्बिनेशन से इंट्रोड्यूस करते हैं और वो डेडली कॉम्बिनेशन है करेज एंड एक्शन। दिस शिफ्ट साउंड्स ग्रेट इन थ्योरी, बट हाउ डू वी एक्चुअली डू इट? रॉबर्ट शुलर सेज इट टेक्स टू थिंग्स टू मेक दैट शिफ्ट, जो हमने पहले बात करी, एंड दैट शिफ्ट कम्स फ्रॉम करेज एंड एक्शन. At the same time, he cautions us and asks us to be doubly careful and says, moving from failure thinker to success thinker is scary. आप सोचेंगे ये कैसा ऑथर है जो आपको अपनी तकदीर बदलने का आइडिया दे रहा है पर साथ में आपको कॉशन भी कर रहा है। ये करते हुए वो हमें बताते हैं कि हमें कॉशियस क्यों रहना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव द सेम रिस्क ऑफ फेलिंग अगेन. सो यू हैव टू हैव दैट करेज टू टेक द टफ डिसीजन ऑफ ट्राइंग वंस मोर, or trying a different method, or trying a totally new approach. At the same time, वो एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी बात करते हैं जो हमारे ऊपर बहुत लागू होती है. Robert Schuller tells us that you have to care more about your goals than you care about looking perfect to your neighbors or relatives. जिसे हमें पहले कहा था, लोग क्या कहेंगे, ये भावना को खत्म करने के लिए वहां पे ये हमें इस कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं. और जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी सबसे मोटिवेटिंग लाइन मेरे लिए ये है, फेल होने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है क्विट करना. The most motivating line in this whole chapter for me is this: the only way to fail is to quit. Every time someone tells you no, a success thinker just sees it as one step closer to a yes. So, what practical steps can you take today? Robert Schuller tells us to make a list of every small success you have had, and he says, हर सक्सेस प्रूफ है कि तुम कैपेबल हो. दिस रिमाइंड्स अस दैट कैपेबिलिटी इज ऑलरेडी विद इन अस. देन ही सेज, चेक योर सर्कल, नोटिस द पीपल अराउंड यू. आर दे फेलियर थिंकर्स हु ओनली कंप्लेन? इफ सो, बी रेडी टू हैव अनदर फेलियर, because that negativity spreads fast. While telling us this, he also tells us that we should choose to spend time with success thinkers because they can inspire us and they can lift us up, they can motivate us, they can encourage us, and by staying closer to success thinkers, we can definitely take a lot of cues. And those cues can be visible, non visible, those cues can be verbal,
and even non-verbal. So Robert Schuller also tells us to take immediate action. He also tells us do one small step today towards your goal. Send that email, make that phone call, send your resume, establish your networking, but don't stagnate. Rather, start moving. Here, Robert Schuller makes a strong appeal that we should all remember for our whole lives. And we should spread the message what Robert Schuller gives us in this chapter. He says, fear paralyzes us, whereas action frees us. Friends, success isn't a destination where you arrive and suddenly everything is perfect. It is never-ending process of managing your own mind. Please stop letting a temporary setback become a permanent label on your forehead. You are bigger than your last mistake. The future is full of possibilities, but only if you choose to see them. Are you ready to make the shift from failure thinker to success thinker? Let me know the same in the comments below by typing, I am a success thinker. Let's fill the comment section with positivity. If this video helped change your perspective even a little bit, hit that like button. It really helps the channel reach more people across the globe. And don't forget to subscribe so that we can keep learning and growing together.